So let's say we start a discussion about scattering theory. Scattering theory comparatively longer topic है. एक तो ये कि देखें, this is different from your master's course. So if somebody is thinking कि scattering theory बहुत ज़्यादा है, so obviously there has to be some difference between your master's MSc or BS scattering curriculum and your MPhil curriculum. So I was not sure because some of you have not taken scattering theory, maybe coming from some other university. We in Karachi University do teach scattering theory, mm, uh, that is Born approximation and partial wave analysis. But in maybe in some other universities, it is not taught in this manner. Furthermore, maybe you have forgotten कि हम जो है वो नो दैट इज़ द स्कैटरिंग थ्योरी आपने जो पढ़ी होगी मास्टर्स में अपनी बीएस फिजिक्स में 4 ईयर या मास्टर्स में मे बी यू फॉरगॉट सो हमने इसको बहुत डिटेल एनालिसिस किया time independent part of a scattering theory. Time dependent part of scattering theory is yet to come, जो कि सब्सिक्वेंटली आगे आएगा. बट ये दो चार लेक्चर्स जो ज़्यादा हो गए हैं वो इस वजह से कि बिकॉज हमें वो चीज़ को भी कवर करना है जो वी हैव डन इन आवर प्रीवियस क्लासेस. सो इट इज़ एज इफ you are doing your revision, but even if you are in um, you have done your masters from KU, still इतना डिटेल एनालिसिस स्कैटरिंग थ्योरी का नहीं किया जाता, लेकिन इसकी ज़रूरत है एमफिल लेवल पर डिटेल एनालिसिस की. सो इस वजह से हम डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पर. ओके. सो लास्ट टाइम इससे पहले हमने बॉर्न अप्रोक्सीमेशन किया, और बॉर्न अप्रोक्सीमेशन में हमने ये देखा दैट इज़ देयर आर टू टाइम इंडिपेंडेंट मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग स्कैटरिंग थ्योरी. In Born approximation, you consider that the energy of the incident particle is much higher as compared to the energy of the scatterer, that is from which the incident particle will scatter. So now अब हम ये consider करें that is the incident particles are at low energy, and furthermore जो हम यहाँ पर एक और अजम्पशन कर रहे हैं वो ये जो कि हमने बॉर्न अप्रोक्सीमेशन में नहीं किया था. दैट इज वी डिड नॉट कंसिडर दैट द पोटेंशियल ऑफ द स्कैटर इज सिमेट्रिक or spherically symmetric, but here in partial wave analysis we are considering that the potential of the scatter is spherically symmetric, और इसके नतीजे में दैट इज बिकॉज ऑफ द सिमेट्रिक पोटेंशियल एंड बिकॉज द इंसिडेंट पार्टिकल हैज़ लो एनर्जी, इन दो अजम्पशंस की मौजूदगी में वी से दैट द स्टेट्स जो स्टेट्स हैं स्कैटर्ड पार्टिकल की, दो स्टेट्स हैव definite angular momentum and they are affected by the scatterer. Yeah. So when we say that the states of the scattered particles have definite angular momentum, so it means that each of the particles would have or we would have particles with unique angular momentum values. And so we can now study or investigate scattering process with the help of these unique features of the particles, that is their unique angular momentum. So we would consider some sort of a summation or combination or superposition of different angular momentum values of different scattered particles, and that's why we call it as partial wave analysis. So लफ्ज partial जो यहाँ पर आ रहा है या partial waves जो यहाँ पर आ रहा है, this is due to the fact that each of that constituent wave in the scattered in fact distribution, that each wave has a unique in fact angular momentum, and so we consider the scattering theory as a superposition of these partial waves. And so we are discussing partial wave analysis. Yeah.
एंड फर्दर मोर जो हमने लास्ट टाइम यहाँ पर डिस्कस किया था, वो हमने दो अजम्पशंस किए थे बिफोर एक्सपेंडिंग योर बिफोर गिविंग अ सोल्यूशन टू द शुडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। और वो हमने अजम्पशंस ये किए थे, इफ़ यू गो बैक टू योर लास्ट फ्रॉम लास्ट टू लास्ट लेक्चर, जिसमें हमने कहा था कि स्फेरिकल जो आपके पास पोटेंशियल है स्फेरिकल हार्मोनिक्स, एंड वी विल ओनली एनकाउंटर टर्म्स विद m इज इक्वल्स टू जीरो। m क्या चीज़ है? m इज इन फैक्ट द प्रोजेक्शन क्वांटम नंबर। सो therefore जो आपके इनफैक्ट स्टार्टिंग वेव एक्सपेंशन है फॉर दिस पर्टिकुलर केस, उसके अंदर वी वुड बी कंसिडरिंग क्रॉस सेक्शंस विदाउट imposing any limitation on the strength of the potential of the scatterer, that is target के इनफैक्ट पोटेंशियल पर वी वुड नॉट इम्पोज एनी लिमिटेशंस। ये फर्स्ट अजम्पशन था। दूसरा अजम्पशन हमने कहा था कि जो पोटेंशियल है टारगेट का, दैट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, और इसके नतीजे में या इसका जो कॉन्सिक्वेंस है, दैट वुड लीड टू these partial waves, that is each of the waves would have a specific angular momentum value. So these were the assumptions जिनकी जिनकी बेसिस पर हमने जो लास्ट टाइम हमने अजम्पशंस किए थे, और अब हम उनकी बेसिस पर एनालिसिस करना शुरू करेंगे। Okay, so even in the presence of such assumption, still we can solve Schrodinger equation for E greater than zero, because the energy of the incident particles is not zero, it is less than the potential of the scatterer. So still we can solve the Schrodinger equation for E greater than zero. E is the energy of the incident particle. V of R is the potential of the scatterer or target. So and then obviously by solving the Schrodinger equation, time independent Schrodinger equation, हम cross sections calculate करेंगे इस article में today. Yeah. So let's start. So even with those assumptions जो मैं last time से continuation में हूँ, so even in the presence of such assumptions, Schrodinger equation, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टाइम इंडिपेंडेंट की, टी आई, कैन बी सॉल्व्ड फॉर ई greater than zero. E greater than zero, that is the energy of incident particles. Yeah, can be solved, and scattering cross sections can be obtained. Scattering cross sections can be obtained. So ये ख्याल रखिएगा कि नो वॉइस, वाई नो वॉइस, वेट, ऑडियो मेरे पास ऑन है, और लेट्स से आ रही है बस? जी आ रही। जी सर, आवाज आ रही है आपकी और क्लियर है। ठीक है, ओके। ओके, सो सो इसका मतलब है कि वी कैन ऑब्टेन स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, और श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है even in the presence of these two assumptions. Why? Because E is greater than zero. So these are minute technicalities when you are using some mathematical equation, because to solve a Schrodinger equation, the two very important ingredients are the potential, अगर बाउंड स्टेट्स की बात हो रही है, और दूसरा ये है कि द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विच इज बाउंड टू द वट एवर द पोटेंशियल। या सो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कैन बी obtained without
without imposing any limitation on the potential V of R. So the famous equation, the Schrödinger equation, उसको हम कैसे लिखते हैं? H bar square upon 2m. The m is the mass of the particle plus del square plus V of R is the potential. इनफैक्ट दैट पोटेंशियल जिस पोटेंशियल के अंदर पार्टिकल होगा मौजूद, साई इज द वेव फंक्शन एंड दिस इज ई साई. सो दिस इज द इक्वेशन. हम इस माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन 2m को फर्स्ट टर्म से निकाल करके ऑल ओवर टू द राइट लेकर आ सकते हैं. और इस सूरत में अगर ऐसा होगा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, दैट इज मैं इस इक्वेशन को थ्रू आउट जो है वो 2m अपॉन एच बार स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं. So by multiplying by 2m over h bar square, हमारे पास क्या आ जाएगा? E जो है on the right hand side, that would be h bar square k square upon 2m. या h bar square k square upon 2m. k जो है वो बुनियादी तौर पर वेव वेक्टर है. And so you would have these quantities. Yeah. देन इन फैक्ट जो आपका पोटेंशियल है, इसको हम, सिंस वी आर सेइंग दैट द पोटेंशियल इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, देन उस सूरत में जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा, दैट वुड बी सम सोल्यूशन विच वुड बी मोस्ट जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस शुडिंगर इक्वेशन जो आपको ऊपर नजर आ रहा है. और दैट जनरल सोल्यूशन वुड कंटेन टू क्वांटिटीज. वन इज द रेडियल पार्ट ऑफ द सोल्यूशन एंड द अदर वन इज द azimuthal part or the spherical harmonic part of the Schrödinger equation. And this spherical harmonic part of the solution would be a function of two angles, theta and phi. And phi is, the horizontal angle, which is basically azimuthal. And since we are talking about spherical symmetry, then and m is equals to 0, देन योर स्फेरिकल हार्मोनिक्स y जिनको हम जाहिर करते हैं, दैट वुड चेंज टू सम फंक्शन विच इज अ फंक्शन ऑफ थीटा ओनली, नॉट द फंक्शन फाई. या सो लेट्स से द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन, the most general solution of टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, दैट वुड बी किसके बराबर हो जाएगा? साई ऑफ आर बिकॉज आर इज द रेडियल डिस्टेंस. या साई ऑफ आर विच इज बेसिकली इक्वल्स टू द रेडियल पार्ट, आर से जाहिर करेंगे, एंड दैट रेडियल पार्ट is in fact a function of r but is dependent upon k and l. K is the wave vector and l is the angular momentum and is a function of r, and it also depends upon y l m. इसको आप ऐसे लिखें या दोनों को नीचे लिख लें, दोनों एक ही बात है, थीटा एंड फाई. यहाँ पर जो आपके पास v ऑफ r है इज सेंट्रल. The system is spherically symmetric, that is, इसका मतलब है it is rotationally invariant. Yeah. The zx invariant about the z axis. So इसका मतलब है कि जो scattered wave function है must not depend upon the azimuthal angle phi. Yeah. So हम इसको y जो आपका spherical harmonics है, y superscript l and subscript m, इसको change कर देंगे to a function which is only a function of theta only. So uh, since v of r is central, सेंट्रल का मतलब v ऑफ आर इज सेंट्रल का मतलब द सिस्टम इज सिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल का मतलब होता है इट इज रोटेशनली इनवेरिएंट, आई रोटेशनली इनवेरिएंट. किसके अबाउट? रोटेशनली इनवेरिएंट अबाउट, लेट्स से एक एक्सिस हमने ले लिया जेड एक्सिस.
कोई और एक्सिस भी लिया जा सकता है, बट लेट्स से हम जेड एक्सिस के बारे में बात करें, सो अबाउट जेड एक्सिस द पोटेंशियल इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, sorry, rotationally invariant. Then the scattered wave function जो है that would not depend upon the azimuthal angle phi. This and since it is not depending upon the azimuthal phi, then इसकी implications क्या है, that m is equals to किसके बराबर हो जाएगा, zero. So the scattered wave function must not depend upon, must not depend upon the azimuthal angle फाइ, और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है कि m इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, जीरो, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं। तो इस सूरत में जो वाई एल एम है, उसको हम कह सकें दैट वुड बी इक्वल्स टू दिस implies that this वाई एल एम of theta comma phi जो है, that would be equals to p l of cos of theta. Yeah, so these are the spherical basal functions. Yeah, so pl cos of theta, these are spherical basal functions. And why? Because we are talking that the wave function is independent, is invariant under rotation about z axis. Yeah. अच्छा, दूसरी चीज जो जो बहुत अहम हो जाएगी इस केस में, अभी हम आगे चलते हैं इक्वेशन के हवाले से। ड्यू टू दिस स्फेरिकल सिमेट्री, जो एंगुलर मोमेंटम है ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल विल आल्सो बी कंजर्व्ड, या एंड सो अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, तो अ पार्टिकल स्कैटर्ड फ्रॉम सेंट्रल पोटेंशियल विल हैव एन एंगुलर मोमेंटम विच इज सेम बिफोर स्कैटरिंग एंड आफ्टर स्कैटरिंग। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो दूसरी बात क्या है, ड्यू टू spherical symmetry, the angular momentum of the incident particle, angular momentum of the incident particle will therefore be conserved। और इसका मतलब क्या होगा, कंजर्व्ड, इसका क्या मतलब है, आई अ पार्टिकल scatter scattering from a central potential, from a central potential will have the same angular momentum value before and after collision, will have the same angular momentum before and after scattering. Yeah, so this is something uh, which is important. Yeah, and दी जो एजम्प्टोटिक सोल्यूशन होगा, अच्छा रिमेम्बर, जो सोल्यूशन है वो उसी तरह से लिखा जाएगा जैसे बिल्कुल हमने इनिशियली लिखा था। दैट इज द सोल्यूशन वुड बी द सम ऑफ टू पार्ट्स, वन इज द इंसिडेंट पार्ट एंड द अदर वन इज द स्कैटर्ड पार्ट। या दैट इज ई टू द पावर आयोटा के डॉट आर, और देन द स्कैटर्ड पार्ट इज सम फंक्शन, जो कि सम मॉडिफाइड फंक्शन बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग, f sub k of omega, that is omega is the solid angle, and it is asymptotic solution. Asymptotic, why? Asymptotic means that as we move away from the scattering center, the strength of this scattered wave would decrease as 1 over r. So that is the that we call it as the asymptotic solution. So we would say, okay,
the uh, the the asymptotic solution, the asymptotic uh, asymptotic solution. That is, what does that asymptotic means? That as r tends to infinity, has the expected form, कैसी, वही जैसे हमने शुरू में लिखी थी, expected form, जो कि किसके बराबर है, साई सबस्क्रिप्ट के ऊपर हमने प्लस साइन लगाया हुआ है. दिस प्लस साइन implies that we are moving in the positive z direction, and this is equals to the number of scatterers times e to the power iota k dot r. k dot r का मतलब है that is the incident wave which is moving in the positive z direction plus fk of omega. ये फंक्शन हम निकालते हैं. हमने बॉर्न अप्रोक्सीमेशन में भी एफ के ऑफ ओमेगा निकाला, यहाँ पर भी हम निकालेंगे आई के आर अपॉन आर. ये आई के आर ई टू द पावर यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई टू द पावर आई के आर अपॉन आर से मुराद क्या है कि दिस इज एसिम्प्टोटिकली डिक्रीजिंग. And then one could think about that this e to the power iota k dot r जो है, इसको हम क्या लेंगे, because k and r are in the same direction, so इसको हम लिख सकते हैं e to the power or have a certain angle theta between them, so e to the power iota kr cos of theta, that is the theta would be the angle between k and r. अगर सेम डायरेक्शन होता तो e to the power iota kr हो जाता, लेकिन बहरहाल यहाँ पर हम कह रहे हैं there is a dependency upon theta angle, so it would be e to the power iota k dot r would be e to the power iota kr cos of theta. That is some angle between k and r. So that changes to e to the power iota kr cos of theta plus fk of omega e to the power iota kr over r. This is basically the function. Now, we assume that the incident plane wave इज इन द जेड डायरेक्शन. ये सब कुछ जो आ रहा है ना, ये इस वजह से कि इंसिडेंट प्लेन वेव जेड डायरेक्शन में, देयर इज नो डिपेंडेंसी ऑन azimuthal angle, so scattering with in fact scattering without phi, and potential is symmetric. Okay, now ये जो आपने क्वांटिटी लिखी है इंसिडेंट वेव की, अगर मैं इस इंसिडेंट वेव को फाई इंसिडेंट कर दूं, ऐसे रिप्रेजेंट करूं, तो दैट इज ई टू द पावर आयोटा के आर कॉस ऑफ थीटा. या then we can express this incident wave in terms of superposition of angular momentum eigenstate. Why superposition of angular momentum eigenstate? Because each of the incident wave will have a definite angular momentum value. So e to the power iota k dot r, जिसको आप लिख रहे हैं e to the power iota k r cos of theta, that could be written as sum of the different angular momentum values, and it can be written in a very definite manner using the Bessel function PL of R. Yeah. So one could write such a function, that is जो Bessel sorry incident wave है, in as a sum of the different angular momentum values. So we could think about the incident wave. Let the लेट अच्छा, ये ख्याल रखिएगा कि हम जेड डायरेक्शन की बात हो रही है, सो मैं हर चीज़ नहीं लिख रहा, इस पर कुछ चीज़ें आप यहाँ पर अज्यूम करें. सो लेट द इंसिडेंट वेव इज गिवन एज, लेट्स से इसको मैं फाई, यानी ये जो इंसिडेंट पार्ट है, ये जो इंसिडेंट पार्ट है ई टू द पावर आयोटा के डॉट आर, इसको मैं फाई आई एन सी से जाहिर कर दूं. दैट इज आई एन सी स्टैंड्स फॉर इंसिडेंट, which is equals to किसके बराबर, that is e to the power iota k dot r, and this is equals to e to the power iota k r cos of theta. Yeah, and these incident waves can be expressed as in terms of the angular momentum. uh, therefore therefore one can, जो हमारा assumption है, therefore one can express the incident waves
as superposition of angular momentum eigenstates. Angular momentum eigenstates meaning each with a definite angular momentum number. Angular momentum number L, quantum number L. And so one could write this equation e to the power iota k dot r, which is e to the power iota k r cos of theta, is equals to, so it is a superposition of different angular momentum waves. So that would be e to the power, that is summation over L is going from 0 to infinity. Uh, that is I to the power L to L plus 1. JL, these are Bessel functions. JL of K of R, PL of cos of theta. So these uh, for these or the detail analysis अगर आप चाह रहे हैं इसका हासिल करना, तो then you have to solve the Schrödinger equation for hydrogen atom, and that Schrödinger equation solution for hydrogen atom would give you the Ligore polynomial, and the solution would be in the form of spherical harmonics, where you would also find the azimuthal angle as well, but हम उसको यहाँ पर suppress करके solution सिर्फ वो वाला हिस्सा ले रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ थीटा एज अ थीटा डिपेंडेंसी मौजूद है, whereas there is no in fact phi dependency of the wave function, yeah. एंड अगेन अगर हम यहाँ पर गौर से इस समेशन को देखें तो these summations जो हैं दे आर sum of partial waves each having specific angular momentum eigenstate, and so that's why we call it as a partial wave analysis, yeah. अगेन इस चीज को अगर हम सॉर्ट ऑफ रिपीट करें, सो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं which are which are sum of partial waves each having a specific angular momentum eigenstate. And so one could say that each of these partial wave is distorted by when these partial waves they interact with the scattering potential V of R, then each of these partial wave will be distorted by the V of R potential. After the part after those partial waves have scattered from this potential V of R. Uh, so after scattering from central potential B of R, each of these partial waves will be distorted by the central potential. एंड हम बुनियादी तौर पर
in order to study the scattering theory using partial wave analysis, we in partial wave analysis basically investigate those distortions in the partial waves, scattered partial waves, yeah. And with the help of those distortions, we come up with what the structure of that central potential जिसको हम investigate कर रहे हैं, ठीक है ना. सो ना वो जो ऊपर हमने श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी है, लेट्स राइट दैट श्रोडिंगर इक्वेशन in another form as a function, replacing that function psi with some function u. और जब हम उसको फंक्शन u की सूरत में लिख रहे हैं तो बेसिकली u एज अ फंक्शन ऑफ r, सो दैट वुड बी सम रेडियल पार्ट वेव फंक्शन. और जो उसका थीटा पार्ट है, जो एंगुलर पार्ट है, वो सॉल्व होकर आ जाएगा. सो इन टर्म्स ऑफ, so let's write in terms of the wave function u of r, uh, we have the Schrödinger equation. कैसी हो जाएगी the Schrödinger equation? बहुत सारी चीज़ें they are coming from your previous understanding, so that is basically again uh, that is the solution of the hydrogen atom. So this is d2u upon d x square, this is u of r, yeah, plus the part containing the angular momentum L, as this is the eigenvalue for the angular momentum, upon 2 mr square, plus v of r is the potential, then u of r, which is equals to e u of r. Yeah. And so then हमने हमें मालूम है k की वैल्यू क्या है. हम अगर सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर दें, और u ऑफ r का मतलब क्या है, सो वेयर k स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू किसके बराबर, 2 me ओवर h बार स्क्वायर. एंड u ऑफ r जो है दैट वुड बी इक्वल्स टू किसके बराबर, दैट इज इन फैक्ट आर टाइम्स आर ऑफ आर. वो आर वही है जिसको हमने कहा था के एल, या. सो दैट इज यू ऑफ आर इज इन फैक्ट आर टाइम्स आर ऑफ आर. और अगर हम इन सब को सब्स्टिट्यूट करें अपनी इस इक्वेशन के अंदर, जो हमने एक और सिंप्लीफाई कर लें आफ्टर, ये जो नंबर्स हैं -h बार स्क्वायर अपॉन 2m को राइट साइड पर लेकर आ जाए और सबको अरेंज कर लें, v ऑफ r को राइट साइड पर ले लें. v जो ये पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को हम राइट साइड पर ले लें. ई के साथ ई को रिप्लेस कर दें बाय के स्क्वायर, और इसको ले आएं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो जो हमारी इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी, और सिर्फ आपके पास जो है वो एक तरह की रेडियल इक्वेशन आ जाएगी. सो वी कुड से दिस रेडियल इक्वेशन can be written after after rearranging terms. कैसे? That would change to, so d2 over d, अच्छा, इसको हम r की सूरत में लिख सकते हैं dr². सो rather than in terms of x, we could write it at d2 into dr plus k square minus l into l plus 1 over r square. This quantity close r into r k l of r, which is equals to 2m over h bar square times v of r, which is the potential of the scatterer, times r into r k l of r, bracket close. Yeah. So this is the
इक्वेशन, अच्छा यहाँ पर ये ख्याल रखिएगा कि ये जो इक्वेशन हमने ऊपर लिखी है, दैट इज द इक्वेशन जिसके अंदर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर जो हमने पी एल ऑफ कॉस ऑफ थीटा लिखा है, तो यहाँ पर जो ईच ऑफ दीज टर्म्स हैं इस इक्वेशन के अंदर, दे आर बेसिकली पार्शियल वेव्स, and each of these partial waves they are joint eigen functions of L square and Lz, ये भी ख्याल हमें रखना है. So the the radial wave function कौन सा, psi of r जो ऊपर हमने लिखा है, wave function equation, बल्कि इसको लिखें each term in the radial wave function psi